3 times Omkara together. Namami Chinmayam Devam Satgurum Brahma Vidvaram Om Vasudeva Sutam Devam Kamsa Chanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Hari Om. Hari Om and welcome to one and all for today's second day of our Bhaja Govindam discourses. As we were discussing a point in the morning, what is this world and how we can relate to this world now is beautifully explained in the coming verses. Let us begin with one very inquisitive thought. The thought is, get pay attention now, is there a pain in love? What is the question? Is there a pain in love? Think. Good question. Okay, so let us 7th verse chant and then we'll explain. Please repeat. Balastavat क्रीडासक्तः तरुणस्तु
Tarunastavat taruni saktah Vruddhastavat chintasaktah Parame brahmani kopi na saktah Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Mudhamate, Samprapte Sannihite Kale, Nahi nahi rashati dukrum karne, So it is said beautifully here, Balastavat Krida Sakta. So now it's an example given of day-to-day life. Right? So what is an example? When children play with their toys, they get completely attached to their toys. Yes or no? Yes. Yes. So this is the first point which is mentioned here. Then the second point is Tarunastavat Taruni Sakta. In that age of young age, then they get attached to their friends very much. So that's also a reality. Then the next point is when the same people they grow little old, then they get attached to what? Then they get attached to their own worries. And it is said nobody is actually attached to that Bhagavan, the Paramatma Tattva. So this is the picture of the world. So let us take one example now. All children, when they get attached to their toys, what is the cause of their attachment? Love from the toys? Security. Okay. From the toy, what security they can expect? A sense of belongingness and pleasure. Yeah. So what they understand that I am deriving happiness from this so-called as object. Yes or no? Yes. Yes. And now please understand, if somebody or some other child, they see a better and a nice toy in someone's hands, then what happens? Then what happens? Then immediately their attention gets shifted to this toy is gone now and that other toy. Hope we all have observed? Yes. Yes or no? Yes. Yes. Now, please understand, if that toy which was there in their hand, if that toy was giving them a real pleasure or joy, why should they shift to something else? Good question. Yes or no? Yeah, so that's a very important point. So what is required here to understand this which is said here, that they are deriving as joy, happiness or pleasure from that object, is no doubt actually they are deriving, but it is temporary in origin. It's not that it's not there, it's there, but it's temporary. And because it is temporary, then that small child imagines, maybe I will have something better in the other toy, and therefore the mind gets shifted from one to another. Okay, so this so-called as shifting from one to another, is called as attachment for the sake of only one and one reason, which is called as deriving the pleasure. Deriving the pleasure.
So whenever we take a consideration of an example, or we take what we call as a situation where a person derives a happiness from the object or a person, please now, without real love, then that person can change that object or that person easily. Why? Because the purpose of object or a person is not love, but it is deriving a pleasure. The moment the pleasure becomes less, mind starts going into a circle. Let me find out somewhere, somehow, where can I get a better joy than this object or a person. Why? Because the reason to go closer to the object or to the person is pleasure. So whenever this thing happens, it is called as attachment, and this is not called as love. So the first difference is clear. What is love? Yesterday we thought of unconditional love. So unconditional love, the first and foremost point is, it is not because of something. It is without that because. It is a natural source of love which absolutely flows because of compassion, because of real love. And the other part, which is called as that attachment, it is because of something. So if it is because of something, if the reason because of which there is so-called as love, if it changes, the object also can change, or a person also can change. So this is what is happening because people are not understanding what is real love and what is called as the attachment. So here example is given to make all of us realize that if we attach to object just for the sake of pleasure or a person, then you cannot have a peace of mind, or you cannot have a harmony in life. How is it so? Now just see. If there is attachment, then we want that object or that person to be with me alone. Then we develop possessiveness. What do we develop? Possessiveness. The moment we develop possessiveness, after that comes insecurity. And wherever there is an insecurity in any relation or anywhere where there is called as a bond, then there is a fear. Yes or no? So, this fear is because of my wrong notion. And that's how we are developing it. So, if we can avoid this wrong notion of deriving only pleasure from the object or from the person and shift it, that no, it is not for the sake of deriving only the pleasure or happiness, but it is for the sake of love alone. Then even though love also passes through a tough situation, a difficult patch in life, but our relation bond does not become loose or does not get break. Please note it. Similarly, with the Bhagavan. Now, Bhagavan is also, we all generally understand as a supply manager. Who is Bhagavan for us? Supply manager, Bhagavan, you remain there. We don't want you, but we want things from you. Bhagavan, मेरी नौकरी है ना, वो भी पक्की नहीं है, तो उसको पक्की करा दो। सो ये हो गया। इसको कहते हैं अर्थार्थी भक्त, जो कोई चाहता है इन
kind in terms of kinds or material or something, wealth. ठीक है। फिर दूसरा भक्त होता है भगवान का, बोलता है भगवान मेरे जीवन में बड़े दुख आए हुए हैं, ओ भगवान मुझसे भी नहीं सहा जाता, आप उसको दूर कर दो। आप क्या करोगे? भगवान मैं शनिवार के शनिवार आऊंगा और एक नारियल जोर से फोड़ दूंगा, आधा आपको दूंगा आधा घर ले जाऊंगा, वो भी पूरा नहीं दूंगा। तो वहां भी हमारा सौदा बड़ा ही कंजूसी का है। ये आर्त भक्त हो गया। फिर ये भक्त जिसको मिलता है फिर सोचता है कहां से आया ये जो मुझे मिला है जीवन में जो कुछ, that person turns to be a जिज्ञासु। क्या बनता है वो? जिज्ञासु। वो पता करना होता है उसको भी कि भगवान है कहाँ। फिर ऐसा व्यक्ति आता है चिन्मय मिशन के सेक्टर नंबर 10 में ढूंढ के कि चलो एक बार तो पता चल जाएगा कि कहाँ है वो। तो जिज्ञासु बनता है और जिस दिन जिज्ञासा उत्पन्न हो गई उस दिन उसका जीवन शुरू होता है। तब तक उसका जीवन शुरू हुआ ही नहीं। क्यों? बिकॉज तब तक तो सब एक्सट्रोवर्टेड लाइफ था, तब तक तो कोई टर्निंग इनसाइड था ही नहीं। इसको ध्यान देना। तो ये चेंज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर द नेक्स्ट वर्स सेज if you do not turn inside then you will never understand the source of joy. Our first question of the first reading, verse number 8, please repeat. Kate kanta kaste putrah sansaro yamativa vichitrah कस्य त्वं कः कुत आयातः सत्वं चिन्तय तदिह भ्रातः भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते संतापे संगीते काले नहीं रक्षति। Bhagavan says here beautifully, Kate kanta kaste putra. Now it is called as an enquiry. Let us start some enquiry. Okay? The first enquiry is, are you all ready for enquiry? Yes. Are you really? Yes. Ask yourself, if a thought is coming in your mind, from where that thought is coming? Have you ever asked? This is a simple inquiry. It is my mind, and the thought is coming in my mind. Should I know or not where it is coming from? आपके घर में कोई व्यक्ति आए तो आप क्या पूछते हो? कोई अनजान व्यक्ति आ जाए, आ जाओ बेटा, बैठो, खाना खाओगे क्या? आ जाओ, अभी हम डाइनिंग टेबल पे आ जाओ। No, the door is also not closed. Door is not open. From the door window in big cities, okay? That, what you want? Where are you coming from? What can I do? Just imagine. हम सवाल पूछते हैं कि आप क्यों आए हो? आर्य राजी, जब हमारे मन में सवाल आता है, थॉट आता है, तो कभी हमने पूछा ये मेरे मन में क्यों आया? देखो जी, किसके मन में आया? मेरे मन में। पर मैंने कभी ये सवाल पूछा ही नहीं कि ये थॉट आया कहां से। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज एनक्वायरी। वैसे ही
आप ध्यान में रखना, दूसरी इंक्वायरी, सिंपल इंक्वायरी फर्स्ट, बिकॉज देयर आर नो लॉट ऑफ न्यू पीपल. आप जगत को देखते हो, ठीक है, तो जगत को जब हम देखते हैं तो जगत यानी ऑल द होल वर्ल्ड. कैन यू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ दैट जगत में मिजरी ज्यादा है या हैप्पीनेस ज्यादा है? अच्छा सवाल है ये. नहीं, मिजरी ज्यादा है या हैप्पीनेस ज्यादा है? अच्छा, हाँ. अभी आप ध्यान देना कि ये सवाल आना बहुत जरूरी है, बिकॉज जो जगत में ज्यादा होगा वही आपके पास आएगा. सोच के देखो. Yes or no? अभी दूसरा सवाल. Your world and the world outside is same or different? Good question or not? Your world and world outside is same or different? Is totally different, because if situation comes and I am unhappy, is your neighbor also unhappy? No. So what does it mean? It is directly that no, the sorrow is in my world and not the world outside. Ayana ji? Yes. So that means I have to be more conscious that how should be my world, and understand if the outer world is more joyful and my inner world is miserable, then there should be a question mark. Why is it so? Ayana. Why is it so? So then correction factor is required, that if outside there is a fantastic happiness and joy all over around me and I'm miserable, that means there is something wrong in my thought pattern. So it is said here, Kate Kanta Kaste Putra Sansaroyam Ativa Vichitra. Now what is called as Vichitra? Vichitra means weird. Why it is called as weird? Because can you predict anyone's any movement anytime? Sometimes yes, but most of the times no. So when you can't predict anything correctly, so we see if that happens which we haven't expected, you say, my God, ये तो बड़ा विचित्र आदमी है या व्यक्ति है. है ना? इसलिए अगर इस विचित्रता को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? Because verse is like that, so I'm just making you think. If I have to reduce this sort of shocks from all sort of people, those who come to us and they give us a shock, then what is the solution? The solution is reduce our expectation from the world around. There will be no shock at all. Think about it. Shock is when we expect and that thing doesn't happen. Ayana, and then only there is a shock. If we accept whatever is happening and then we respond correctly, then there is no shock possible to anyone, anytime. This is a very important aspect. How to gear up and have a shock ups all around us by a simple one principle. Let us reduce the expectation from anyone around us. Then
our mind remains quite joyful and cheerful and does not get into a so-called as shock attacks. Next point, where it is said, from where all people are coming to us. Why this boy or this girl or this child has come to me? Have you ever asked? Why? Why this person is with me for last 40 years? 30 years, 20 years. Why? How many people are there in the world? Why this person alone? Good question or not? Yes or no? Yes. Now here we have to understand. There is called as a web of our own different actions which are extremely well connected with n number of people around us. So one is called as Samashti Prarabdha, another is called as Vyashti Prarabdha. What is called as Prarabdha? It is called as destiny in English. Samashti means together we suffer or together we enjoy. That's called as Samashti Prarabdha. Vyashti Prarabdha, a person gets something and he alone enjoys or suffers. That's called as Vyashti, means individual. Right? So, every one of us are interdependent, and that's how our life is. Nobody in this world, even a sannyasi, can live a complete independent life. Yes or no? Even though he has taken a sannyas, but he cannot live completely independent life. Why? Because for food, for shelter, and for so many other things, requirements, that person has to depend on the whole social strata of the whole world. Yes or no? Yes. That means there is no one which is completely independent in this world. Fine. So when we understand this, that there is called as a destiny. Please note, here is a very big confusion in the minds of n number of people. That somebody is writing my destiny. Big cross. No. Then how? As my own actions I do with right or wrong attitude, I am creating my own destiny. So please note this statement of Puj Gurudev Swami Chinmaya. Very beautiful and very accurate. He says, you are a product of your past and you are the producer of your future. I repeat, you are a product of your past and you are the producer of your future. Now tell me, destiny is in whose hand now? Guruji, it is in my hand. I am creating my own destiny. Simple example. Like in your dream. Who is creating a dream? Guruji. तो जोर से बोलिए. आप क्रिएट कर रहे हैं. तो आपने पहले नंबर से पास होना है कि फेल होना है, कौन बताएगा? If in dream also, if I suffer, it is because of anybody else. If in dream also I remain as a king, it is because of. In dream also I have lot of good people around, it is because of. If in dream also I have a very bad father-in-law, mother-in-law, then because of. Because of not anyone else. Because of my own imagination. Yes or no?
Similarly, the life which today we have is a product of my own past. Please note it. Today, whatever way you are living is not because of anyone in the world. It is because of me, myself. And in future also, whatever we are going to do is also because of what I am going to think now and act upon it, then that is going to give me whatever good or bad experiences in life. Now we have to decide, how should I frame my future? Yes or no? How should I frame my relationship? You think? Which relationship does not have a conflict? एक रिलेशनशिप बता दो कि कभी उस रिलेशन में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ ही नहीं, ऐसा कोई है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ, how to grow about the conflict is a right relationship. Yes or no? Guruji. One who understands this can create a real good relation bonds in wherever you are, in the family or outside. So when your relation bonds are very strong and based on a very right principles, then that relation gives us always a peace and harmony. So Bhagavan is telling, think about all what we have thought now, that how the so-called as situations are coming to us, good or bad, how do we handle them? It's not because God is sending to all of us, but it is because of our own different action in our own past. And then how a situation comes, how do we handle, that is going to give an effect in the future. So, anyway, our future is in our hand. Please think about it. So it is said here, this is how the Chintanam should be done. Now, very beautiful verse is coming up. Please repeat the 9th verse. Satsangatve nisangatvam, Satsangatve nisangatvam, Nisangatve nirmohatvam, Nisangatve nirmohatvam, Nirmohatve nischalatatvam, Nirmohatve nischalatatvam, Nischalatatve jivan mukti, Nischalatatve jivan mukti. Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam Bhaja Muramate, Samprate Sankhite Kale, Nahi Nahi Akshati Kum Karne. Satsangatve Nisangatvam. Okay. It is said here, let us have a Sangha, association of that which is called as Sat. Now what is called as Sat? Sat, that which is very firm and that which is permanent and does not change because of different situations, because of different pressures, or because of different sort of any sort of, I can say, a people or any kind of objects. ऐसा जो भी है वह सत, कि जो बदलता नहीं है. अभी आप ध्यान देना, अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता सुनाई कौन से युग में? कौन से युग में? और हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं कौन से युग में? भगवत गीता बदल गई? कितने अर्जुन बदल गए? अर्जुन बहुत बदल गए, भगवान कृष्ण भी बदल गए. क्या
नहीं बदला। जो अर्जुन को भगवान ने सुनाया था, आज उसी के बंदे वही ज्ञान सुना रहे हैं। आइए ना बोलो जी, यह है सत्य कि जो कभी नहीं बदलता। अभी ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है समझना। प्यार हिंदुस्तान में एक अलग चीज है, प्यार पाकिस्तान में एक दूसरी चीज है, प्यार लंदन में एक तीसरी चीज है, और प्यार लास वेगास में एक तीसरी चीज है। हाँ या ना? बोलो जी, आर यू श्योर? ध्यान देना, प्यार हिंदुस्तान में भी वही है, और युगांडा में भी जाए तो प्यार प्यार ही होगा। प्यार की डेफिनेशन नहीं बदल सकती। यस और नो? यह है सत्य कि जो सब यूनिवर्सली इट इज वन एंड वन अलोन, एंड इट कैन नॉट बी डिफरेंट फॉर अ डिफरेंट पर्सन। ध्यान में आ गया जी? ट्रूथ is universal, one and one alone. Does it changes according to the change of religion? बोलो जी। That is called as Sat, that which never changes. Okay. Now just imagine. Ask, if you want to know anything, unless and until you know the nature of that thing, can you able to know that thing correctly? Swami ji, became very fast. Oh, please come again. अच्छा, किसी चीज को अगर आपको जानना है, किसी व्यक्ति को आपको जानना है, तो उसका स्वभाव जानना जरूरी है या नहीं? बोलो जी। नहीं? उसका स्वभाव जाने बगैर आप उसको जान जाएंगे? नहीं जानेंगे। उसका स्वभाव जानने के लिए कितने दिन लगेंगे आपको? स्वामी जी, ये कौन सा बात बड़ा कठिन है। मैंने बहुत प्रयत्न किया इसको जानने का, बट ये बड़ा ही विचित्र आदमी है। जितना मैं जानना चाहूंगा उतना ये बदलना चाहता है। So, unless and until you stay with that person for sufficient long time, you will not know the colors of that person. आया ना बोलो जी? अगर आपको अपने हस्बैंड के बारे में या पत्नी के बारे में PhD बोलने को बोला करने को, तो कितना टाइम लगेगा? Good question and good thesis, you know, title. That will be the PhD. Yes, and that will be the hot cake, selling cake of the whole world, the best seller. Okay, fine. So सोच के देखिए कि जब तक आप उस व्यक्ति के साथ रहते नहीं, तब तक आप उस व्यक्ति के रंग जानते नहीं। जब तक आप ज्ञान के साथ रहते नहीं, तब तक आप उस ज्ञान को जानते नहीं। प्लीज ध्यान देना इसको। ज्ञान के साथ रहना यानी क्या है? ज्ञान कोई ऑब्जेक्ट है जी? बोलो, आप उसके साथ रहोगे कैसे? गुड क्वेश्चन और नॉट? बोलो, कैसे रहोगे? उसको जानने के लिए रहोगे कैसे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, वेरी गुड, जोर से बिग ताली। Unless and until you practice it, live that knowledge, you will not know the reality of the knowledge. Yes or no? Yes. यह है सत्संग कि जब तक आप उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारोगे नहीं, तब तक आपको उस ज्ञान का महत्व भी नहीं पता चलेगा, उसका रंग भी नहीं पता चलेगा, उसका इफेक्ट भी नहीं पता चलेगा। यह सत्संग
बोले सत्संग में आने के बाद ही निस्संग होता है, यानी सारे गलत ख्याल सारे दूर भाग जाते हैं, सारे के सारे। कई उदाहरण है हमारे पास। देखो, सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारा पूज्य गुरुदेव का है। इतना बड़ा उदाहरण तो मैंने आज तक देखा नहीं, इतने करीब से, कि जो व्यक्ति, मेरे जीवन में तो भगवान की कृपा से फेथ थी और मुझे कभी ऐसा नहीं था कि भगवान नहीं, ऐसा कभी विचार नहीं था, पर जो व्यक्ति के जीवन में भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं थी, जो भगवान को मानते ही नहीं थे, ऐसा व्यक्ति भगवान का पूरा भक्त बन जाए और पूरा जीवन उसके लिए कुर्बान कर दे, ये मिराकल है या नहीं बोलो जी? हाँ या ना? इससे बड़ा मिराकल और क्या चाहिए? ये ध्यान देना जरूरी है। तो इसका मतलब यह है कि निस्संग यानी जो गलत ख्याल हमारे जीवन में चलते हैं और जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं, वो परेशानी की वजह दूसरी और बाहर कुछ भी नहीं। स्वामी शिवानंद जी और स्वामी अब्दुल कलाम और मिस्टर अब्दुल कलाम जी की एक छोटी सी स्टोरी बहुत अच्छी लगती है मुझे, हमेशा मैं बोलते रहता हूँ, ये बात ध्यान में रखना। वो फाइटर पायलट बनना चाहते थे, नहीं बन सके बिकॉज ऑफ हिज वीक आईसाइट, सो ही वाज वेरी डिप्रेस्ड, अब्दुल कलाम जी। सो ही वांटेड टू जस्ट एंड द लाइफ। तो बोले चलो जाकर के गंगा जी में इस शरीर को डुबो देते, मर जाते। फिर हरिद्वार में गए, वहां कुछ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ थी, वहां से ऋषिकेश गए, बस एक बड़े शिला पर यानी पत्थर पर बैठे थे कि यहां से छलांग लगा दे। तो उधर से उनको एक पीछे से परछाई नजर आई। उन्होंने मुड़ के देखा, उनका चेहरा मुरझाया हुआ, वेरी वरीड सॉर्ट ऑफ। उस व्यक्ति ने बोला, defeat the defeatist in you, you will create miracles. Can you repeat it? Defeat the defeatist in you, you will create miracles. ये अब्दुल कलाम मिराकल बनाया नहीं, बोलो ये पूरे जगत का आया ना। कहा एक आदमी मरने जा रहा था और कहा वही आदमी इस देश के सुप्रीम चेयर पे जाके बैठा। क्यों? He just threw away all his wrong notions and stood absolutely straight and erect on that sub part of his own very permanent self. ये ध्यान देना कि जब कोई चीज अगर हमको कठिन लगती है, हम परेशान रहते हैं और हमको लगता है क्यों होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, तो ये सारे गलत विचार हमारे होते हैं। इसलिए ये सत्संग जो ऐसा सोर्स है जो कभी आपको नेगेटिव बनने ही नहीं देगा, पॉसिबल नहीं। कोई सत्संग में आ जाए और नेगेटिव हो जाए, ऐसे कभी आपने सुना है? तो निस्संगत्व निर्मोहत्व, जिसका वास्ता ज्ञान से हो गया, उसकी दृष्टि कैसे हो जाती है? पूरी से चमक जाती है। चमकना यानी क्या? इल्यूजन गोज अवे। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज इल्यूजन। ये बहुत बड़ी बात है। अभी आप ध्यान देना, ये बहुत सिंपल सवाल है बट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप प्यार के भिखारी हो या प्यार के दाता हो? सिंपल भाषा मानेंगे, आप प्यार के भिखारी हो या प्यार के दाता हो? इसको ध्यान में रखना। और कौन बने फिर रहे हैं हम लोग? बोलो जी, कितना प्यार आपके इस आंच के हृदय में है, कभी आपने ये सोचा? बोलो जी, कितना है?
इतना इतना बोलो. We have infinite love in our heart, but because of our wrong notion, we have made it so limited. I am Bolo. Bolo Bolo. Yes. Now, who is going to expand that? Bolo. जो आपके पास है, बट आपने उसको कैसे कर दिया? सीमित बना दिया. अभी अब उसकी चाबी किसके पास है? बोलो जी, किसके पास है? जब तक उस असीमित प्यार की चाबी आप खोलोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा एक्चुअली the source of happiness is here and not there. It is here. क्योंकि प्यार से बड़ा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इस दुनिया में कोई भी नहीं है. आप कहीं भी जाके देख लो, कहीं भी जाकर अनुभव कर लो. जिसके ताले की चाबी खुल गई, उसका तो जीवन बन गया. फिर वो सीमित प्यार नहीं करता. एक व्यक्ति से उसका प्यार लिमिटेड नहीं रहता. उसका प्यार रहता है क्योंकि वो प्यार की मूर्त बन जाता है. यह है मोह को हटाना. मोह क्या है? अपने आप को लिमिटेड बना के रखना. इसने ये नहीं किया, इसलिए मैंने वो नहीं किया, इसलिए वो नहीं किया, इसलिए मैंने वो नहीं किया, इसलिए ऐसे किया, इसलिए मैंने वैसे किया. Oh my God, you are a limited and a very miserly person with such a wrong notion in your mind. Throw away this and experience who you are there. Every moment you will be bubbling with the joy and you will say, where should I distribute it? So much joy we all have because we have unlimited source of love within. Source of love. Within. आप सोच के देखो. मैं इसका सिंपल उदाहरण बताता हूँ. छोटा सा बट बहुत सुंदर. एक बार मैं ट्रैवल कर रहा था 15-20 साल पहले. फ्रॉम मुंबई टू गोवा. आई वॉज पोस्टेड इन गोवा. ओके, तो ट्रेन से मैं ट्रैवल कर रहा था. तो मैं इस बर्थ में बैठा था, साइड बर्थ, और एक फैमिली यहाँ बैठी थी, एक फैमिली वहाँ बैठी थी. और एक फैमिली में एक अम्मा थी, लेडी, और 2 छोटे बच्चे. छोटे बच्चे ने एक 5 साल का, एक 3 साल का. अभी आप सोचो, एक बड़े बर्थ पे एक अम्मा, एक 5 साल का और 3 साल, कितनी जगह रहेगी? सोच सकते हैं आप. हम सब लोग ट्रेन में प्रवास कर चुके हैं और करते भी हैं, बहुत सारी. उसने आते ही बोला, ए तुम लोगों को ना नींद आ रही है, सो जाओ. देखो आप पॉइंट देख रहे, ध्यान देना. वो बच्चे बोले, मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही. मैं बोल रही हूँ ना, नींद आ रही, सो जाओ. जबरदस्ती को सुला दिया. सुला क्या दिया? निपटा दिया. बस बैठ गए तो, और अपने पैर ऐसे करके बैठ गए. कोई नहीं बैठता है उस चेयर पे, उस बर्थ पे. ठीक है, एक बेचारा बंदा आया कोई, जिसके छोटे बच्चा था, छोटे. माता जी थोड़ा सा इधर उधर करो, नेक्स्ट स्टेशन. नहीं, जगह नहीं हमारे पास, जगह नहीं हमारे पास. तो मैंने बोला, बेटा यहाँ बैठ जाओ. बैठ गया. दूसरा स्टेशन है. दूसरे स्टेशन में एक अम्मा चढ़ी, और इसको पता नहीं था चढ़ने वाली. अरे उसका नाम था कोई मीनल, यस, समथिंग लाइक दैट. आई थिंक आई रिमेम्बर मीनल.
अरे मीना तू कहां से आई? बोले देखो ना मेरे पास ना बहुत जल्दी से मैंने टिकट कटवाई, लेकिन वो बेटी, अरे फर्क क्यों बैठी है? ए बच्चों उठो उठो, चलो बाजू चलो, आजा तू बैठ जा। भैया जगह कहां से तेरी आदमी? बोलो बोलो, क्या जोर से बोलो। जगह ऑलरेडी थी, ओनली माइंड में नहीं थी। आया ना बोलो जी। This mistake you all do. माइंड में इतना प्रेम है, ये पता ही नहीं हमको, हम उसको ऐसे सिमेंट करके बैठे और लॉक कर दिया और बस खत्म, भिखारी बन के घूम रहे हैं कि ये मुझसे प्यार नहीं करता। What is this? My God! Hope you understand. This is called as moha. That not understanding what you are. And what are you thinking about yourself? And crying for what? You are a source of happiness. Just imagine. So Bhagavan says, जिसको ये पता चल गया, सत्संगत्वे निस्संगत्वम्, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम्, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम्, निश्चलतत्वे जीवन। इसका तो जीवन बन गया। अभी इसको कोई बांध नहीं सकता इस दुनिया में। कौन बांधेगा? बोलो। जो सभी से प्यार करता है, उसके जीवन में नफरत रह सकती है? बोलो जी। नहीं। जिसके जीवन में नफरत नहीं, उसको परेशानी कहां से आएगी? बोलो। यह है सत्संग। तो आज आप लोग एक प्रॉमिस करो कि आज के बाद I will not limit my love to this much alone. I will open the lock of my heart and let it flow to the world around. Today onwards, I will not be a beggar of the love, but I will be the wholesale distributor of it. wholesale में जितना लेना है, क्योंकि कम तो होने वाला है। बोलो जी, आपको सौदा अच्छा लगा? देखो सत्संग में आप क्या आ गए आज, आपको तो जीवन का पूरा गणित ही पता चल गया। भगवान, एक परेशानी है। क्या है? याद रखो। मुझे लगा था आपकी परेशानी सब चली गई होगी। मा कुरु धन जन यौवन गर्वम्, मा कुरु धन जन यौवन गर्वम्, हरति निमेषात् काल सर्वम्, मायामयमिदमखिलं बुद्ध्वा, ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा, भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते, गोविन्दं भज मूढमते, सम्प्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते तुम करने। भगवान कहते हैं, अगर आपको मुझे मेरे पास आना है और आपको अगर मुझे पाना है, तो एक बड़ी चीज है जो हरदम बनी हुई है। तो क्या है? बोले गर्व, यानी प्राइड, यानी अहंकार, यानी ईगो। ये बना हुआ
real source of love, the real source of knowledge. It is one and the same. देखो, करना क्या पड़ेगा? मां कुरु, मां यानी यहां मत करो। किसका गर्व? धन यानी वेल्थ, जनन यानी ये वो मेरे चाचा जी, बच्चा जी, काका जी, पापा जी वगैरह वगैरह वगैरह। आपको पता है वो मेरे माना कैबिनेट में वो है जी, ये वाला है वो जन कि मां गुरु धन जन यौवन, पूछो मत, यौवन का गर्व तो अरे बाबा, ऐसा लगता है कि बस मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं। ऐसे लगता है तब कुछ भी हो जाए बस कि मैं सारी दुनिया को खरीद सकता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। पर ये है हमारा ईगो। तो भगवान से मां कुरु धन जन यौवन गर्व, क्यों? हरति निमेषा काल सर्व, उसको जाने के लिए समय नहीं लगता है, ऐसा चला जाता है कि पूछो मत। इसलिए भगवान कहते हैं समझो इस जगत को, ये मायामय है। ये पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज कॉल्ड एज मायामय जगत? ठीक है, जगत इज एज इट इज। ठीक है, आपको जगत से क्या चाहिए? ये प्रश्न पूछो पहले। सबको जगत से एक ही चीज चाहिए कि अलग अलग चाहिए? गुड क्वेश्चन। कोई बोलेगा मुझे पावर चाहिए, कोई बोलेगा मुझे पैसा चाहिए, कोई बोलेगा ये दोनों नहीं चाहिए, मुझे बहुत बड़ी पोजीशन चाहिए, कोई बोलेगा नहीं ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स चाहिए, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ, है ना? अभी आप देखो कि इस जगत में से इतनी सारी चीजें इतनी लोगों को मिलनी चाहिए, यानी वो चीज जगत में होना जरूरी है या ना? ठीक है, that thing should be there in this world, then only we can get it. It is now. अगर भगवान आए, इमेजिन करिए, और भगवान ने बोला कि आप एक चीज मांग लो इस जगत से मुझे, तो आप क्या मांगेंगे? बस एक चीज। स्वामी जी थोड़ी लिस्ट बढ़ा ना। नहीं, लिस्ट नहीं बनने वाली है, बस एक ही चीज, भक्ति। भक्ति, क्या? हैप्पीनेस। भगवान को ही मांग लो, भगवान से। भगवान को ही मांग। अब मैंने क्या बोला? इस जगत से आपको एक चीज मांगनी, सत्संग, मोक्ष। अच्छा, okay, this I just wanted to give you this sort of reflective thought कि इस जगत से मुझे क्या चाहिए exactly? Have you ever thought? I'll tell you no. Exactly what you want. One thing. Peace of mind. ध्यान देना, आप जगत से मांग रहे हो पीस ऑफ माइंड। इतनी बड़ी गलती है, क्या बात है जी। नहीं, भगवान से मांग रहे हैं। ये मैंने जगत में है कि पहले मैंने क्या बोला? जगत की चीज। अच्छा, जगत की। अभी ध्यान में आ गया कि जगत की चीज आपको क्या? What do you expect? One important thing from this whole world. कि तू दूर ही रहे हमसे। Very good. अपना जगह न पड़ेगा। देखो जी। So we haven't given a good thought about it. That what I exactly want from this world. What I exactly want from this world.
Confusion, one cheese player. Haji, one cheese, that's the point. Nothing. One. Nothing. So this is a thought for today. I will explain it tomorrow. Good. So Bhagavan says, see, if one thought you can cross, you can come to me. One cross. One thought you have to cross this thought. Okay. 12th verse. Dinyaminyo sayam prata Shishira vasantau punarayata Kala kridati gacchatyayuhu Tadapi na munjati ashavayu Tatimkate kanta dhanagata chinta Vatulakim tavanasti niyanta Vijagati sajjana sangati reka Bhavati bhavanavatarane nauka Jatilo mundi lunchita kesha Kashayambara bhagukruta vesha Pashyannapi chana pashyati mudha Rudara nimittam bahukruta vesha Angam galitam palitam mundam Dashana vihinam jatam tundam Ruddho yati gruvitva dandam Tadapi na munjati asha pindam Agre vatni prushte bhanu Ratrau chubhuka samarpita janu Karatala bhikshas tarutala vasa Tadapi na munjati asha pasha Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Govindam, Bhaja Muramate, Samprate Sannite Kale, Nahi Rakshate Kumkrunkarane. Bhagavan is giving suggestions for our mind to understand and let us not get into this trap. So Bhagavan is giving suggestions where all the traps are. Fine, one by one. The first, Bhagavan says, Dinya minyo sayam prata, shishira vasanto punarayata, kala kridati gacchati ayum, tadapina bunchati asha vayu. First and foremost, when every day comes and every day goes, what can you stop in a day? Can you stop anything in a day? Nothing. That what comes goes in its own speed. Yes or no? Outside, weather comes and weather goes and weather changes. Can we stop or create it? No. Okay. Our own, when we were young, when we were a child and became young and became then little adult and then old, could we stop any of the stage? No. Then, if anything here, anything there,
I cannot stop. What are we thinking of? I want something permanent about this or that. In the world, what is permanent? Nothing is permanent. Think about it. Because the nature of world is continuous modification. So there is no permanency in the world outside. In our body, mind and intellect, is there anything which remains permanent? No. Nothing. So that means inside, outside, there is nothing called as permanent. But still, we have this illusion that tomorrow, with this body and with this world, I will be happy. Think about it. Next, Bhagavan says, if we do not have a faith and we just get carried away by n number of things in life, then your life cannot experience peace at all. The basis of the peace and harmony is unshakable faith. Please note it. What is the basis of peace and harmony? Unshakable faith. Now just see. If in husband and wife there is an unshakable faith, then will you have any time insecurity in your life? Think about it. Never. And if there is no insecurity in life, can you ever have a fear? No. If you have no fear, that means you are fearless. And how the fearless person lives? Guruji. Very happily. Because of lack of faith, there is a fear. Please note it. Fear is because of one and one reason. Lack of faith. Bhagavan says, can't you have this simple principle in your life to have an unshakable faith? Next, Bhagavan says, there are people in this world, they change their garb, means कपड़े, और पेट भरने के लिए ऑरेंज कपड़े ले लेते हैं. कितने लोग हैं ऐसे? बहुत सारे हैं. मैं किसी को कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, प्लीज, बट दिस इज रियलिटी. हमारे एक चिन्मय युवा केंद्र का लड़का गया हरिद्वार उसके फैमिली के साथ, और रात को वो घूमने गए, और रात को वो जब घूमने गए तो एक कॉर्नर में 5-6 लोग ये कपड़े पहन के बैठे थे और दम मारो दम चल रहा था. वो वापस आया, स्वामी जी, बोले आपके जैसे स्वामी जी थे वहां और वो ऐसा कर रहे थे. देखो, वो तो इनोसेंट लड़का, उसने कभी देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं, इसलिए वो समझा कि ये एक ही जैसे रहते हैं. अभी ध्यान देना, डॉक्टर्स भी बहुत है, बट किडनी चुराने वाले भी डॉक्टर ही है ना. बोलो जी, इंजीनियर भी सेम ही है, बट वो इंजीनियर बन करके ब्रिज में सब घटिया मार डाल करके लोगों को ब्रिज गिरा करके मारने वाले भी इंजीनियर ही है या नहीं? बोलो जी. बड़े बड़े ऑफिसर, वो भी ऑफिसर है, लेकिन करप्शन करने वाले वो भी तो ऑफिसर ही है या नहीं? देखो, इसको ध्यान में रखना है. किसके लिए चल रहा है ये? पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है. भगवान says,
Let us not fall in this trap. Be aware. ऐसे गलत विचारों में फंसना नहीं है, क्योंकि ये गलत विचार हमको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट भगवान से देखो, कुछ लोग जीवन के उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहां हाथ में डंडा भी नहीं रुकता। अंगम गलितम गलितम बोले तो बिल्कुल अभी कुछ शक्ति नहीं रही। गलितम मुंडम, सारे दांत भी चले गए। बोले आपने मुझे छोला पूरी तो लाते ही नहीं हो, आप तो मुझे बढ़िया बढ़िया सा कुछ खिलाते नहीं हो। अरे माय डियर, अभी उस चीज खाने का समय नहीं है, ये कब पता चलेगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनविहीनम जातम तुंडम वृद्धो वाति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुञ्चति आशास्तेन। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। एक सवाल पूछो, मिलने के बाद क्या करने वाले हो? अरे मुझने को होता नहीं है और पैसा पैसा कर रहे हो, उठ के पैसा तो हाथ में भी नहीं रहेगा, दंड में यहां से वहां नहीं जा सकते हो, क्या पैसा पैसा चला है? Do not have the strength. Please know, in everyone's of life, including the speaker, one time can come where you may have in your life such situation where you are on the bed and it's difficult to get up also and nobody comes to us. What will you do? अगर भज गोविंदम साथ में नहीं है ना, तो पूछो मत, इस व्यक्ति से मिजरेबल व्यक्ति कोई नहीं रहेगा। इसको ध्यान में लाना चाहिए। इसलिए इस सारे आशा पाशा को बाजू में रख करके अपने मन को उस गोविंद के साथ जोड़ना अनिवार्य है, नहीं तो ये सारी चीजें आते जाते रहेंगी, हम भूल जाएंगे कि किसके साथ सच में मेरा संग होना जरूरी है। देखो वो बोलते हैं बहुत अग्रेव अग्नि पृष्ठे भानु। अग्नि मीन्स फायर। ये आजू बाजू में फायर करके बैठा है अंदर में ये व्यक्ति, जो भी कोई बैठा है। ऊपर भगवान सूर्य नारायण चमक रहे, स्कॉचिंग हिट। अग्रे अग्नि पृष्ठे भानु रात्रि चुमुक समर्पित जब ठंडी में बैठा है करते हुए, अभी भी उसका लगा हुआ है क्या, काश कोई दिन आएगा मुझे वो पोजीशन मिल जाएगी, इसलिए मैं कर रहा हूं तपस्या। ये भगवान क्या पागलपन लगा के रखा है। ध्यान में आया? भगवान says, let us not fall in this illusory trap. Live your life with complete joy within. And such life is a fulfilling life. कल भगवान बताने वाले हैं इस जीवन में 3 इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है। अगर वो 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास है तो आपको इस दुनिया की कोई भी चीज हिला नहीं सकती। भगवान का नमस्कार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
Sriman Narayana 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 Srimanarayana Narayana Narayana Mata Narayana Pita Narayana Mata Narayana Pita Narayana Guru Narayana 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 Guru Narayana 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 Guru Narayana 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 Guru Narayana 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 Sriman Narayana 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 Srimanarayana Narayana Narayana Tujhme Narayana Tujhme Narayana Tujhme Narayana Tujhme Tujhme Narayana Narayana Tujhme Narayana Tujhme Narayana Sabme Narayana 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 Sriman Narayana 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 Srimanarayana Narayana Narayana Sriman Narayana 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 Srimanarayana Narayana Narayana Sriman Narayana Srimanarayana Sriman Narayana Srimanarayana Boli Sri Narayana Bhagavan Ki Any question for today's topic to anyone you can ask? So I told Kalpanama, there is no requirement of a separate Q&A session. I will just ask every after my session, and then and there let us clear whatever, if any question is there. Swami ji, I had one point. Yeah. ये तो आपने कहा है ना, ठीक है, we are a product of our past. क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर ऑफ फ्यूचर की बात करते हैं आप, तो इसमें देयर इज एक सुखमनी साहब में तुक आती है, करण करावन हार स्वामी, आपे करने हार. तो करावन हार आप अगर इसको थोड़ा हिंदी में या इंग्लिश में बताएंगे तो करावन हार के he is not only the doer, he is also the creator of the circumstance. He is the director behind the scene. कि वो अगला सीन वैसे ही होगा जैसे आपके लेखे में लिखा है. वो करावन हार भी है. तो I agree there is an algorithm. Definitely I call it a software algorithm of karma. That जब आप एक giant computer है, आपके कर्मों के हिसाब से पिछले जन्म पास का I got it now. है ना? Whatever you want to say, I got it. तो वो फ्यूचर का थोड़ा पहले ध्यान दीजिए कि आपके जीवन में जो प्रसंग आ रहा है उसके कर्म फल दाता ईश्वर है. प्लीज नोट इट. दिस इज व्हाट इट इज सेड देयर. आपके जीवन में जो प्रसंग आ रहा है वो कौन ला रहा है? भगवान ईश्वर. ठीक है जी. फिर आप उसको कोई भी नाम दो. इज दिस क्लियर फर्स्ट? यस और नो? Yes. Now please note that prasanga is coming to you not because of the fanciful mind of the Ishwar, but because of your own actions which are coming to you through him, because he is the karma phaladata of the whole universe, and he is not partial. He is extremely impartial, and therefore whatever good or bad, even if he or she, whatever you think about the God, brings to your life is not because of his whims and fancy, it is because of your own actions in the past. Previous births. Past is previous birth. Yes. Even Not only previous birth, this birth too included in past it. of this birth also. Yes.
अगर आप 60 साल के अभी हैं समझो, तो आपने कितने कर्म किए इसी साल, इसी जन्म में? बहुत सारे। तो किसको पता है कौन सी चीज कहाँ भी आ रहा है? तो कर्म फल दाता को समझना जरूरी है। He is a कर्म फल दाता, but he is not bringing the action or the atmosphere or the situation in your life because of his own whims and fancies. No. That's a great point. That is also related to your karma. Yes. And in this life when we suffer, human beings we suffer some disease, किसी को बहुत acute कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इसका मतलब ये कि पिछले जन्मों में कुछ हमने वो कदम किए होंगे। अगर आपको एक बहुत सुंदर किताब पढ़नी है, बहुत very sort of a practical and a very worldly person writing, okay? So many masters and many lives. आप प्लीज पढ़िएगा सब लोग, by Dr. Brandis. Extremely beautiful book. And कैसा वो डर के वो लिख नहीं रहा था, पर एक दिन उसके दिल में आ गया कि जो हो जाए वो हो जाए. I am going to write the truth. Many masters, Many many lives, lives. many lives, many masters. Many lives. You must read. Beautiful book. ठीक है जी, प्लीज रिपीट आफ्टर मी. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः. सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे सन्तु निरामयाः. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ पूर्णमद ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते. अवशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ओम्. हरिः ओम्. श्रीगुरुभ्यो नमः. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. हरिः ओम्. Thank you for being with us. See you tomorrow at 8 o'clock and then in the evening 6 o'clock.